Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the gross plot and not plot area. What are gross plot and how it is determined, and what is net plot and how its size is determined. This is very important for experimental purpose. When we do the experiment in the field, we make some plot for the treatment execution. So what should be the size, how it is decided, what should be the minimum size, that is a gross plot, and how we determine the net plot means the total plot yield is not calculated, only a small area is selected for the yield estimation, and that plot is called net plot. So what is the difference between gross plot and net plot we will discuss, and how the size is determined in the experiment field we will discuss here. And a question may be asked in examination by giving the some values, find out the gross plot or the net plot. So we should have the clear cut idea about the gross plot and the net plot. For example, we are conducting experiment on wheat crop, and wheat crop is sown at a row spacing of 20 centimeter. So in this case, only row spacing is given and plant to plant spacing is not given, and we have just putting the seed in the row. Continuous seeding is there, so plant to plant spacing is not maintained. So in many crops, plant spacing is not maintained, only row spacing is there, like pea, like pulse, etc. Other crop, for example maize or cotton, here row to row spacing and plant to plant spacing is maintained. Suppose it is 60 centimeter row to row and plant to plant spacing is 25 centimeter. So in such case, the plot size will be different. And another maybe the sugarcane. In sugarcane crop, sugarcane also row to row spacing is given, and no plant to plant spacing is maintained. Spacing may be 75 centimeter or 90 centimeter. So there may be different type of crop. So in generally two type of crop where only we maintain row to row, and other type we maintain row to row as well as plant to plant. How we determine the gross plot, here we will discuss. For example, first example is wheat. For example, wheat, and we are conducting the experiment in wheat, and we are evaluating the effect of nitrogen level. For example, treatment effect of 40 kg, 60 kg, 100 kg, 120 kg, and to evaluate the effect we make some plot. For example, the plot, how the plot length is selected and how the rows are selected, how many rows. So row to row spacing is 20 centimeter. Okay, so this, and we are adjusting the row in such manner, row spacing is there. So how would be the minimum rows? Okay, for, and this is, we can say this is the length, this is the length of the plot, and this is the width of the plot. And the width of the plot is always in multiple of row spacing. So width is decided by the multiple of this row. This is 20 centimeter, it means in meter it is 0.2 meter. So it means the multiple is 1 meter, means 5 rows. There will be 5 rows in 1 meter. 1 row 0.2 meter, 20 centimeter means 0.2 meter. So in 1 meter, how many rows will be there? 5 meter. In 2 meter, there will be 10 rows. And in 3 meter, how many rows? 15 rows. So we can have 2 meter or 3 meter, but not 1 meter. 5 rows are less. So we maintain the row in such a way that there is a proper competition effect, proper treatment effect, and we can do some intercultivation practice. Suppose we have 5 rows only, so it means 1 meter width is there. This is not sufficient. Okay, so row length may be 3 meter. So, okay, so there will be 15 row. So this is the way. Okay, now suppose we have a 3 meter, then 15 rows at 20 centimeter can be accommodated. So these are 15 rows. Now another is how to maintain the length or how to keep the length. Okay, so the length is decided by the plot size. So in generally
we keep 15 to 20 square meter area in general. Gross plot area means this is the total plot. Total plot is, this is the gross plot. We can say it is gross plot. So the gross plot is the total area where crop is sown. So it is in general 15 to 20 square meter. Okay. So if it is 3 and we suppose keep 5 meter length, then the plot area is 5 into 3, 5 meter into 3 meters, that is 15 square meter. So it means a plot of 3 meter width where 15 rows will be accommodated and length 5 meter is sufficient for experimental purpose in case of wheat. So it is a 15 square meter. So if we keep, we can have a more area, 20 square meter, 21 square meter. But if it is 3, definitely we keep 6 meter, then it is 18 square meter. If we keep 7 meter, then it is 21 square meter. In general, 15 to 20 square meter is sufficient, but we can have more plot area. But as the plot size increases, the total experimental area increases. Suppose this is one plot and there are suppose 10 treatments or 3 replications. So 10 treatment with 3 replication means 30 plots are required. If one plot area is 20 square meters, so for 30 plot 600 square meter area would be required. तो ऐसे करने से हम अगर प्लॉट साइज बहुत बड़ा कर देंगे तो हमको, क्योंकि 30 प्लॉट्स बनाने हैं 10 ट्रीटमेंट के साथ, तो बहुत बड़े एरिया की जरूरत होगी, तो उसमें हेट्रोजेनिटी बढ़ सकती है और हम मैनेजमेंट हमारा पुअर हो सकता है. सो दैट्स वाई ग्रॉस प्लॉट इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी मैनेज्ड प्रॉपरली. ना तो ये बहुत छोटा होना चाहिए, अगर बहुत छोटा होगा तो इसमें क्रॉप कॉम्पिटिशन इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं आएगा, इंटर कल्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी. सो दिस इज द ग्रॉस प्लॉट एरिया. ओके, so 15 rows are sufficient and the length may be 5 meter. If we keep 4 meter, then it is 12 square meter, 6 meter, 7 meter, but the plot size increases. So in general, we keep in the range 15 to 20 square meter area, and this is not the strict limit. ये बहुत ऐसा नहीं है कि इतना ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो, लेकिन कम प्लॉट साइज रखेंगे तो उसमें ट्रीटमेंट इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंटल एरर ज़्यादा आएंगी, मैनेजमेंट हालांकि अच्छा होगा लेकिन ट्रीटमेंट इफेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा क्योंकि क्रॉप की जो रोज होंगी प्रॉपर कंपटीशन में नहीं होंगी. और वी हैव टू इवैल्यूएट द ट्रीटमेंट इफेक्ट अंडर प्रॉपर क्रॉप कंपटीशन. तो ये एक एरिया सही है. तो 20 स्क्वायर मीटर से हम इस तरह से हम कर सकते हैं. तो नाउ द ग्रॉस प्लॉट एरिया इज 15 स्क्वायर मीटर इन दिस एग्जाम्पल. सपोज मेज इज देयर. नाउ द लेंथ एंड विड्थ बोथ आर डिसाइडेड बाय द क्रॉप ज्योमेट्री. Suppose maize geometry is 60 centimeter into 25 centimeter. It is row to row spacing and this is plant to plant spacing. So it means this is the plot and we have to sow the crop in this manner, row in this direction. So this width should be multiple of this 60 centimeter. 6 centimeter means 0.6 meter. So multiple of 0.6 meter means 1.2 meter, means 2 rows only. If we keep 1.8 meter, then only 3 rows. If it is suppose 3 meter, then we can adjust 5 rows. If it is 3.6 meter, then we can adjust 6 rows. Or suppose it is 4.2 meter, then we can adjust 7 rows. Okay, suppose we have 5 rows, then it is 3 meter. So in 3 meter we can adjust the 5 rows, 1 2 3 4 and thus 5. Now this length is decided by this plant to plant. Now this length should be multiple of this plant to plant spacing. This is 0.25 meter. So length should be multiple of 0.25. So multiple of 0.25 means 0.5 meter, 1 meter, 1.25 meter, 1.5 meter, and then 2 meter, 1.75 meter also, and then accordingly 3 meter, 4 meter, 5 meter, but it should be multiple of 0.25 meter. So suppose we have 5 meter.
तो हाउ मैनी प्लांट्स विल बी इन वन रो? सो इन 1 meter this is 0.25, so in 1 meter there will be 4 plants. So in 5 meter there will be 20 plants. So there will be 20 plants in one row if length is 5 meter. तो हमें ध्यान देना है कि अगर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग भी दी हुई है तो हमें ये जो लेंथ रखनी पड़ेगी ऐसे रखनी पड़ेगी कि ये इसके मल्टीपल में हो। तो फिर हम प्लांट काउंट कर सकते हैं कि 4 मीटर में कितने होंगे। 0.25 मीटर इट मीन्स देयर आर 4 प्लांट्स इन 1 मीटर। अगर हम 4 मीटर रखते हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 4 जा 16 प्लांट्स। अगर हमारे प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग नहीं दी है तो हम इसको कुछ भी रख सकते हैं, 3 मीटर 2.5 मीटर कुछ भी रख सकते हैं। बट दिस अगर हमसे पूछा जाए कि कैन वी कीप 1.4 मीटर लेंथ और 2.4 मीटर लेंथ? नो, वी कैन नॉट कीप 2.4 meter because this is not exact multiple of 0.25 meter or 25 centimeter, but this 2.4 meter can be kept in case of wheat where plant to plant spacing is not maintained. तो 2.4 मीटर हम मेज के केस में नहीं रख सकते क्योंकि प्लांट टू प्लांट बिल्कुल एग्जैक्ट मल्टीपल में नहीं आ रहा है, लेकिन वीट के केस में हम रख सकते हैं क्योंकि हमें प्लांट टू प्लांट वहां मेंटेन नहीं करना है। सो बी केयरफुल इन दोज क्रॉप वेयर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल मेज, कॉटन, इस तरह की क्रॉप्स में, लेग्यूम है, पल्स है, मूंग बीन है, उड़द बीन है, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जहां हमें एग्जैक्ट रखना है क्योंकि वो बिल्कुल नंबर ऑफ प्लांट्स एग्जैक्ट आएंगे उसमें। सपोज वी हैव 5 मीटर एंड देन इट इज 5 3 जा 15, so 15 square meter is sufficient. So this is the gross plot area. Now this is the width. So minimum how many rows are required in gross plot? मैं इसको 3 मीटर भी रख सकते हैं, 5 रो भी रख सकते हैं, 3 रो भी रख सकते हैं, 6 रो भी रख सकते हैं, 7 रो भी रख सकते हैं। मिनिमम रोज कितनी होनी चाहिए ग्रॉस प्लॉट में, इसको देखते हैं। minimum rows. So suppose it is plot and these are the rows. Okay, so suppose 5 rows are there in case of maize, 1 2 3 4 5. Suppose 5 rows are there. Okay, so this is the border row and this is also the border row, and we have discussed the border row effect. Please watch that video in the playlist, a border row effect. In case of border row effect, plants are more vigorous, produce more yield because of less competition, more availability of resources. So it means these plants will show more yield compared to the treatment effect. So that's why we remove the border these 2 row. तो ये 2 रो तो हमें खत्म करनी पड़ेंगी। देन सैंपल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस रो, दिस इज द सैंपल रो, दिस इज सैंपल रो। वी सेलेक्ट द सैंपल पीरियडिकली एट 15 days after sowing, 20 days after sowing, 30 days after sowing for determination of dry matter. So we cut the plant away, remove the plant for the analysis of leaf area index etc. तो हमें ड्राई मैटर लेना है या लीफ एरिया निकालना है तो हम इस से प्लांट्स काट लेते हैं, तो इनमें प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दैट्स वाई दिस रो इज आल्सो डिस्कार्डेड. This is not selected. This row is not selected. This row is not selected. This row is not selected. Now the plant population is reduced, so this row plant will face less competition and there will be more availability of resources. So there is chance that this row plant will produce the more yield because of less competition. क्योंकि यहाँ से हमने प्लांट कम कर दिए तो इन प्लांट्स को ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, तो उनकी यील्ड भी ज़्यादा होने का चांस है, टिल्डिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्रांचिंग ज़्यादा हो सकती है. दैट्स वाई दिस रो इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. ओके, सो हाउ मेनी रोज आर डिस्कार्डेड, नॉट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड. तो हमारे 4 रो को हम कम से कम हमें खत्म करना होता है, उसको हम नहीं लेते हैं. 2 बॉर्डर रो एंड 1 सैंपल रो एंड अनदर 3rd रो एडिसेंट टू सैंपल रो. तो इस रो को भी हम खत्म करेंगे. तो इसका मतलब कि अगर हमारे किसी प्लाट में 4 रो हैं तो उसमें 4 रो खत्म हो गई, हमें कोई नेट प्लॉट यील्ड नहीं मिलेगी. सपोज वी हैव 5 रोज, देन वी कैन हैव द 1 रो फॉर द यील्ड डिटर्मिनेशन, बट 1 रो इज वेरी लेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड. 1 रो अगर हम ले रहे हैं,
अगर हमने 5 रो लगाई हैं तो 4 रो तो हमारी खत्म हो गई, तो केवल एक रो की यील्ड ही हमें मिलेगी प्रॉपर एस्टिमेशन के लिए। तो एक रो से बहुत अच्छा हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मिनिमम 2 रोज आर रिक्वायर्ड। 2 rows. So how many rows are minimum required? 1, 2, 3, 4 rows are discarded and 2 for the yield estimation. तो कितनी हो गई है? 4 plus 2, 6 rows. So there should be minimum 6 row in experimental plot area. तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमें लगाने के लिए कम से कम 6 रो हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 रो बॉर्डर में चली जाएंगी, एक सैंपल रो में हम नहीं लेंगे क्योंकि सैंपल निकाले जा रहे हैं टाइम टू टाइम, और उसके बगल वाली रो भी नहीं लेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, और 2 रोज का तो हम कम से कम सैंपल लेंगे, रीड करेंगे, तो 6 रोज आर रिक्वायर्ड। सो इन केस ऑफ मेज, कॉटन, शुगर केन, दिस 6 rows are required. For example, in case of wheat, 6 rows are required, but in case of 6 row, because in case of wheat it is 20 centimeter spacing, so 6 row is 1.2 meter. So 1.2 meter is very less spacing for the treatment effect. तो अगर हम 6 row मेज की लेते हैं तो at the row spacing of 60 centimeter, then it is 3.6 meter. So 3.6 meter is sufficient width. But in case of wheat, 6 row means 1.2 meter is not sufficient. So it means in close spacing crops, we increase the number of rows. And in any case, rows should not be less than 6. But we can adjust up to 5 rows. अगर हमको केवल एक ही रो का yield लेनी है तो हम 5 रो में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन we should maintain 6 rows to have the yield from 2 rows. तो कम से कम 2 रो की yield तो हम लें, क्योंकि एक रो से हमें एक्सपेरिमेंटल एरर ज़्यादा आ सकती है. So this is the gross plot area and this is the elimination of the row. So it means only these 2 rows are used for the yield estimation. So this is net plot. So net plot is the area from which yield is estimated, yield is calculated. So yield is not calculated from the whole plot. The whole plot is gross plot, but the net plot is the area where we determine the yield. तो ये इन दो जो रो है, इन्हीं की हम मेज की yield लेंगे और उसको फिर हम हेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे एकड़ में कन्वर्ट कर देंगे. इसकी क्यों नहीं ले रहे हैं उसको बता दिया, क्योंकि बॉर्डर रो है, ज़्यादा yield आएगी. सैंपल रो है, प्लांट्स कम हो गए हैं. इस रो में चूंकि रो प्लांट कम हो गए हैं तो इसको ज़्यादा स्पेस मिला है, कंपटीशन कम मिला है, तो इसकी yield ज़्यादा हो जाएगी. ये भी बॉर्डर रो है. ओके, नाउ द अनदर इज दैट the plant last and first plant also have border row effect, because that's why these plants are also discarded. So it means the net plot area is only this one, leaving the first plant and the last plant in the row. So this is possible in case of maize where plant to plant spacing is maintained. But suppose it is wheat, so we cannot eliminate one plant. यहाँ देखिए मेज का अगर प्लांट होगा, चूंकि बिल्कुल डेफिनेट डिस्टेंस पे होगा 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, नेट प्लॉट में नहीं लेंगे. इधर से एक प्लांट को हटा देंगे क्योंकि बॉर्डर पे है, इधर से हटा देंगे, ये भी बॉर्डर पे है. लेकिन व्हीट के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता. मटर के केस में तो वन प्लांट कंटिन्यूस होते हैं, लेग्यूम्स कंटिन्यूस होते हैं. तो दैट्स वाई वी रिमूव द एरिया अबाउट 0.5 मीटर हेयर and 0.5 meter here, and maybe remove 1 meter from both side, 2 meter from both side. So this is the net plot area. Net plot area is the area from we calculate the yield. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस प्लॉट क्या होता है, जिसमें हम पूरी सोइंग करते हैं. ग्रॉस प्लॉट एरिया हम कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू रो स्पेसिंग एंड द प्लांट स्पेसिंग. और हमको कितनी रोज रखनी है, कम से कम 6 रो रखनी है, ताकि हमारे 2 सैंपल रो में हमारा नेट प्लॉट में आ सके. नेट प्लॉट कैसे निकालते हैं, बॉर्डर रो को, सैंपल रो की बगल वाली रो को हटा देते हैं, फर्स्ट प्लांट और लास्ट प्लांट को हटा देते हैं अगर प्लांट टू प्लांट मेंटेन है. इफ प्लांट टू प्लांट इज नॉट मेंटेन, फॉर एग्जांपल वीट, पी एटसेट्रा, देन एरिया, सर्टेन लेंथ एरिया इज रिमूव्ड. सो 0.5 हेयर, 0.5 हेयर, देन दिस इज द नेट प्लॉट. अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हाउ इट इज कैलकुलेटेड. नेट प्लॉट एरिया एंड ग्रॉस प्लॉट एरिया. सपोज वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. वीट इज सोन एट 20 सेंटीमीटर एंड 15 रोज आर प्लांटेड in gross plot, and the row length is 4 meter.
then find out the gross plot. So 20 centimeter 15 row, so how much area? Oh sorry, how much width? 300 centimeter, means 3 meter. So it means if sewing is done in this manner, so 15 rows are sewn in this manner, 15 rows, and this is 3 meter. So this is the width 3 meter and row length is given 4 meter. So now the gross plot area is 4 meter into 3 meter, that is 12 square meter area. So this is the calculation way. So this is the gross plot area. Now the net plot area, how net plot area is calculated? And it is given that only 5 rows are selected in net plot, 5 rows selected in net plot, leaving the 5 rows from both side. So 15 rows are there, तो 5 rows इधर से हमने डिस्कार्ड कर दी and 5 rows इधर से डिस्कार्ड कर दी. Only 5 rows are selected between the row. Okay. Only mid 5 rows are selected, leaving the 5 rows from the both side. तो 15 rows थी, हमने 5 रो इधर की छोड़ दी, 5 रो उधर की बॉर्डर रो में ले ली हमने. बॉर्डर रो में हम क्लोज स्पेसिंग की ज़्यादा भी ले सकते हैं, केवल 5 रोज को सेलेक्ट कर रहे हैं. एंड लीविंग दी 0.5 मीटर एरिया इन द लेंथ फ्रॉम बोथ द साइड. तो 0.5 मीटर हमने इसको भी यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया एंड 0.5 मीटर डिस्कार्ड हेयर. ओके, सो 5 rows आर सेलेक्टेड. तो नाउ दिस लेंथ इज 5 rows at 20 centimeter, that is 100 centimeter, that is 1 meter. So this is only 1 meter. Now what is the length? This length, actually this is 4 meter. So 0.5 meter, reduce the 0.5 meter here, 0.5 meter here, means total reduction 0.5 plus 0.5, that is 1 meter. So 1 meter is reduced. So here देखिए 0.5 मीटर यहाँ से हटा दिया, 0.5 मीटर यहाँ से हटा दिया, तो कितना मीटर हट गया? 1 मीटर हट गया. तो कितना बचा? 4 minus 1, that is 3 meter. The total length was 4 meter, but leaving the 0.5 meter here and 5.5 meter here. So now the length is 3 meter. So in this case, net plot area is 1 meter into 3 meter, that is 3 square meter. So this is the way how net plot area is selected. So first count the number of rows in net plot area, 5 rows, 6 rows, 10 rows, whatever, multiplied by the row spacing, then convert into meter, then find out the leaving portion from the both side, 0.5 meter or 1 meter, whatever. Then find out the net length and multiply the both, this width and this net length. This is the net plot area. Now suppose it is a maize crop, then what would be the gross plot and net plot area? Suppose maize is planted at 60 centimeter and 5 rows are planted, and net plot only 1 row. अब यहाँ देखिए 4 रो तो खत्म हो ही जाती है. Net plot is 1 row and plant to plant spacing is 25 centimeter and leaving the 1 plant from both the side, and the length of the plot is 5 meter. Then find out the gross plot and the net plot. Okay, so this is the plot, rough sketch. We will make rough sketch. 5 rows at 60 centimeter. So 5 rows at 60 centimeter, 60 centimeter into 5 rows, it means 300 centimeter, that is 3 meter. So this is the 3 meter. This is the length. Sorry, this is the width. Now length is given 5 meter. This is the 5 meter. Now the gross plot area is 3 into 5. Simple, 3 into 5, that is 15 square meter. Now net plot area, only 1 row is selected, net row. तो देखिए ये border row discard हो जाएगी, पूरी discard हो जाएगी. This is border row also discarded, this is sample row discarded, and this is the adjacent to
sample row discarded, only selected row is 1. And in the question, the row may be different, 4 row, 5 row, 6 row, 10 row, and net plot row may be different. So here example is of 1 row. So 1 row spacing is 60 centimeter. So width is 60 centimeter means 0.6 meter. So net plot में जो ये width आई that is 0.6 meter. And the leaving the one plant from both side. Here the plant to plant spacing is maintained 25 centimeter. So one plant spacing is 25 centimeter. It means we are leaving 25 centimeter spacing here, means 0.25 meter. And we are leaving the 25 centimeter here. One plant means 25 centimeter means 0.25 meter. So the total reduction in the length is 0.25 plus 0.25, that is 0.5 meter. So total length is 5 meter and reduction is 0.5 meter. It means its length is 4.5 meter. So the length, net plot length is 4.5 meter and width is 6 meter. So length is 4.5 meter. So now the net plot area is 4.5 meter into 0.6 meter, that is 2.7 square meter. 2.7 square meter. So this is the way how the net plot area is calculated. So be careful whether plant spacing given or not. If it is given, then plants are removed. अगर हम यहाँ 2 plant को remove करते, for example, if 2 plants are removed, then 50 centimeter will be removed. क्योंकि 1 plant की spacing 25 centimeter है, तो 2 plant की कितनी हो जाएगी 0.5 meter means 50 centimeter. तो 50 centimeter here, 50 centimeter here means 1 meter will be reduced. तो यहाँ पे हमारे net plot length कितनी रह जाएगी, फिर 4 meter रह जाएगी. So whether it is plant to plant spacing given or not, it is very important. So how gross plot area and net plot area is determined, we have discussed with the examples. तो जो हम पूरी sowing जिसमें करते हैं, that is gross plot area, but only few rows are selected after discarding the border row, sample row and adjacent row, and then row which are selected for the yield estimation is known as net plot area or net plot row. Then area is calculated because this area is also border row, so leaving the both side area. So this is the gross plot area and net plot area. Thank you very much.